Ma'am, myself Yashi Tiwari. I studied in class 9th H, Kendriya Vidyalaya, Push Vihar. I would like to present my site, my web page that I have created with the help of Google site. So here is my site named My Study Buddy. I have created this so that this can provide material to class 9th grader. So in this, I have included our objective. This help in easy learning of math, science, English, social science, and art, provide learning material, notes, video lecture, online test, quizzes, NCERT solutions. Drawing made by viewers that are sent through Google Form will be showcased in the art corner that is students. Q&A section will respond to their queries and a feedback chatbot to improve experience. Here, if you are able, here is a Landbot. So I have created this so that student can know how to use this website if they are having trouble to use this website. In this, they just have to tell the Landbot what subject and what things they are wanted to read. It will redirect them to that page. And here are the subjects corner, and it will provide all the materials that a ninth grader needs. So for example, I will share the screen of mathematics. So here it provides very simplest explanation so that student can understand it in a better way. So here you got NCERT mathematics book, solution notes, exemplar, test, helping material. Also, I have provided here a painting section where student can upload their paintings, and this will actually very good. I have also included here some of my paintings so that they can get ideas about what they have to submit here, or any craft they have made, they can submit it here. So I have also included here my Tinkercad projects that I have made during the training session. So let it be visible. Okay, fine. So here I have made the door lock password with the help of Arduino, a gas detecting alarm that can let you know if the gas is leak, it will start buzzing. Here, a social distancing alarm. Here I have light of Arduino and some simple circuits using breadboard and coin battery. Here all my projects, so student can see it and get idea regarding their projects. I have also made some games and animation. Here is a Corona Warrior game, and here is a happy birthday animation. So I have also put it here a Landbot that provide me feedback about the experience of students or anybody that uses this site. So here the viewer can send their feedbacks and we will improve according to their needs. Here is a Q&A. If there is some question in their mind which they are not able to find, they can mail me through this and I will definitely respond to their queries. Here I have also provided them syllabus of 3 subjects, math, and social, so that they do not have trouble in their syllabus. So as student also have to know about the 7 wonders of world, I have made here a tool so that they can know about the 7 wonders and how they look as well as where they are. So when they click at I button, they would get rid of what is this and when it was made, where it is located. So here are all 7 wonders. So student can look and enjoy. It will be a better experience if they are using a virtual reality device. So as the student nowadays stick to the screen and do not do some physical exercises. So here I have provided some videos so that they can get redirected to the YouTube session where they find the yoga poses. I have also put it here the QR code of my website Study Buddy and a one-pager template so the viewer or user can get what the site contains. So this is my
project. I hope all of you like this. ओके, सो वेबसाइट के अंदर मैं जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं मैंने उन सबको अपलोड करा है और मैंने यहाँ पे 2 वेब पेजेस बनाए हैं और ये बाकी सारे एम्बेडेड लिंक्स हैं। सो पहले 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो ये स्टार वॉर्स का एक वीएफएक्स मैंने बनाया था। सबसे पहले एक स्क्वाड बनाई गई थी 3D में एंड देन उसको एक लाइव फुटेज में डाल दिया गया था। जो ब्लैक डॉट हैं उन सबको मोशन ट्रैकिंग के लिए यूज़ करा गया है ताकि ऐसा लगे कि ये स्वॉर्ड एक्चुअल में टेबल पे रखी थी। देन यहाँ पे माउंटेन मैंने बनाए थे ब्लेंडर के अंदर। यहाँ पे मैंने पार्टिकल से एक ही ट्री को पूरे माउंटेन पर डाल दिया था और लैंडस्केप एड ऑन की वजह से एक लैंडस्केप बनाया गया था। देन यहाँ पे एक माइनक्राफ्ट की एनिमेशन है। इसमें हमने माइनक्राफ्ट गेम की जो वर्ल्ड थी उससे 3D मॉडल्स एक्सट्रैक्ट करे थे एंड देन उनको एनिमेट करा गया था। देन ये 3D मॉडल मैंने करा था नोबिता के घर का डोरेमोन से। इसमें मैंने एक स्ट्रीट बनाया था, ये अलग अलग उसके एंगल्स हैं। एंड देन ये फाइनली मैंने डोनट बनाया था, ये बहुत पहले का है। सो ये मेरे जितने भी 3D प्रोजेक्ट्स थे उन सब का इकट्ठा करके रखा है। देन यहाँ पे मेरे पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें वैसे ज़्यादातर कोड है, यानी कि आप इसको कॉपी करके अपने आईडी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कोड है मेरे वर्चुअल असिस्टेंट का, जिसका नाम मैंने फ्राइडे रखा है, जो कि छोटे मोटे काम कर सकती है जैसे वेबसाइट पर लॉगिन करना, जीमेल भेजना, और ये एक चैटबॉट भी है, यानी कि आप इससे कुछ सवाल पूछेंगे वो भी करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। देन यहाँ पे मैंने ये गेम भी बनाई है, इसका नाम है रूफटॉप निंजा। ये पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर चलता है। ये भी असल में एक एम्बेडेड लिंक है। तो ये मैंने itch.io पे अपलोड करा है, इसको go.game इंजन में बनाया था। आप चाहे कर सकते हैं बट इसको लोड होने में टाइम लगता है। देन ये चैटबॉट है जिसके अंदर ये आपके जितने भी मैसेजेस हैं उनका रिप्लाई देता है। तो ये पहले आपका नेम डालेगा, मैं कर देता हूँ आदित्य। देन फिर ये पूछ रहा है कि आपको इन तीनों में से क्या पसंद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3D मॉडलिंग सिलेक्ट करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा। देन ब्लेंडर, देन ये पूछेगा कि आपको क्या करना है, आपको कुछ लर्न करना है या फिर कुछ सीखना है। तो ये आपका फिर पूछेगा आपका लेवल एंड देन ये आपको उस हिसाब से ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपके लेवल के हिसाब से ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता है। अगर आप इंटरमीडिएट पे हैं तो ये दूसरा ट्यूटोरियल प्रोवाइड करेगा, बट बिगिनर के लिए ये ट्यूटोरियल ज़्यादा बेहतर है। देन ये मैंने एक क्लीनर रोबोट बनाया था, ये एक आर्डिनो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आर्डिनो की मदद से घर की साफ सफाई कर सकता है। इसके पीछे माइक्रोफाइबर लगा है जिसकी वजह से ये सफाई कर पाता है और डस्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। इसको एंड्रॉयड टैबलेट या फिर किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि आप बेड पे बैठे बैठे घर की सफाई कर सकते हैं। तो यही थे मेरे प्रोजेक्ट जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे हैं। ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, यानी कि इसका मकसद किसी को हेल्प करना नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके अपलोड करा गया है यहाँ पे। थैंक यू। प्रोजेक्ट है वॉइस टाइपर। जो भी आप बोलते हैं वो उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि टाइपिंग के अंदर जो मैनुअल लेबर लगता है उसको कम करा जा सके। सो ये वॉइस टाइपर का कोड है जिससे कि जो कि एग्जीक्यूट होता है, ये पाइथन में रिटर्न है। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी एक्सटेंशन लोड हो रही हैं।
ये अगर हम दबाएं कंट्रोल शिफ्ट, देन इसको चलना चाहिए। अभी एक्सटेंशंस लोड हो रही हैं। हेलो, मेरा नाम आदित्य है। तो जैसे देख सकते हैं, जो भी मैंने कहा वो उसने टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस बार इसने ज़्यादा टाइम लिया है क्योंकि अभी विजुअल स्टूडियो कोड भी अपलोड हो रहा था और मीटिंग भी चल रही थी, तो इसीलिए इसने ज़्यादा टाइम लिया है, बट अदरवाइज इट्स क्विक। माई नेम इज आदित्य एंड दिस इज ATL। तो ये हर जगह चलता है और जो भी आप बोलेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही सेम फीचर आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी होता है, आईफोन के अंदर भी और एंड्रॉयड के अंदर भी, बट पीसी के लिए कुछ ऐसा भी करंटली अवेलेबल नहीं था, तो आई नीड इट। और ये हर जगह चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ड पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और हमारी स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में चल रही है, और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट दबाते हैं तो ये हिंदी में ट्रांसक्राइब करता है, और अगर हम कंट्रोल ऑल्ट दबाते हैं तो ये इंग्लिश में करेगा। तो अभी मैं आपको इंग्लिश में करके दिखाता हूँ। हेलो, माय नेम इज आदित्य एंड दिस इज जूम मीटिंग। तो देख सकते हैं ये इंग्लिश में ट्रांसक्राइब हो गया है, और हम हिंदी में भी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो थैंक यू, दिस वाज माय प्रोजेक्ट। Hello everyone, my name is Varuni Sharma and here I'm showing you my projects I've made till now under ATL. So this is a LandBot. This is a chatbot made using LandBot. You can start your conversation here. For example, I'll click hi now. You can type your name here. You can click any option out of these. Are you interested in artificial intelligence or ATL? Yes, I am. So it would ask you one or two questions that, do you want to visit my school's channel or something else? Do you want to visit my image classification site, which is a teachable machine? If you click on this open file, this will take you to a new site of teachable machine. So this is the end of chatbot. So this is a teachable machine. In this black area, when you switch on the camera comes, and here the output. When I show a pen in front of the camera, this shows 100%, and when a table clock, this shows 100% and here and all 0. This is not only for used for pen, bottle, spectacles or table clock, but it is a face recognition, and it works as a face recognition thing, which is really helpful in many areas. Now, this is a QR code. I've made it using QR code monkey. This is a QR code of a YouTube channel. And this is a photo collage. It is made by using Adobe Spark. I have used my own photos of Nainital and made it. The features in Adobe Spark were good. And now the main project we've made, my team Maxis under Tinkerpreneur. My team, in which I am Varuni Sharma and Divyansh Srivastav. We have made an app.
this. You can see the app name is Tinker Kid. When you open it, the main thing which this app does is give you all the information about ATL and all the information related to the and it shows all our projects. For example, here you can log in. You can also participate in the group chat. If you have any queries, you can talk to us too from here. And our team, it has many features, like if you want to add your own project in this app, you can go here. It is a Google form. You can just attach your work here, and if we like it, we'll upload it in the app. And students work in ATL lab. It is the website. It is our website. It shows all the work done by us till now under ATL. And it is some information about ATL, more information about ATL, which will take you to the AIM main website, because no information would be more than that. ATL's in Delhi. As we are in Delhi, so ATL's in Delhi would be much informative to know where you can find the closest ATL. Equipments used in ATL lab. You can see there are many equipments used in ATL lab. You can see some of them here listed for your understanding. So you can all see our app and get some information about ATL. Thank you. Hello everyone, my name is Divyansh and these are my projects which I am going to show you. So first of all, I am showing my first website made using Google Ads. So this website contains all innovations projects made by me and some other students of me. So this is the website and its name is ThinkerKid. This is official website of the app ThinkerKid, which I am going to show you later. So in this website you can see all the projects and innovations made by me and other students also. Like this was the ultrasonic distance measuring device. Nowadays it is used in cars, other gears also. Now second come is a game which is made through Scratch. Scratch is a gaming software which helps student to develop game using block coding. So this is very interesting game. You can play. Its link is visible at the bottom of the video. You can see it. Next is other tinkering lab gaming module solution. So this was a full detailed video how to make a game using a Scratch for the students under ATL lab. So innovation 5 is a full waste material truck which is made using a paper. So this truck contains almost 500 paper rolls which are set up in a shape of a truck. Next is a paper gun which works on principle of Newton's third principle. Third law, every action there is equal and opposite reaction. This works on that principle. So innovation 7 is a circuit which consists of 3 bulbs and all glow. This is mainly works on principal electricity. Next is a racing track. The name of this track is dangerous track. This contains all, or I can say many principles on physics used in physics, like you can say banking of a curved road, like that principles. So this is a very interesting car racing game. It consists of 2 levels. One is the circle one and one is the straight one. So it contains 2 levels. Next you can see many other students work, like circuits, their videos, their work, and some websites, other websites. I have total around 5 websites, but in this video I will go to show you only 2 websites which are currently published in Google and giving me a best response.
it gives me about 100 views per day. So this is a chatbot made by a student, and this is a app or website link, you can say. If you want to upload your work, to get your work showed in a website and app, you can click on this link and your work would be published. So this was my first website, ThinkerKid, for mainly app. Next is Class 11th Physics. This website contains all information of Class 11th Physics content. So I am going to show you. If we see, this is the all about information that we can search in this site. It contains search columns, then it contains some home pages like previous year papers and many others, and then comes, if we go on previous year question papers, it will give you all related content which is necessary for examination. Like it will give you all types of examination papers 2015 to 2019 evening वेकेशंस वाले सारे आपको इसमें मिल जाएंगे. नेक्स्ट कम्स इज इम्पोर्टेंट फार्मूलाज. सो इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूलाज आपको सारे मिल जाएंगे फिज़िक्स के, बेसिकली 11th के. और उसके पहले थोड़ा सा गेमिंग का आता है. गेमिंग का बेसिकली क्या बोलूँ,